Hi guys, I'm Siddharth Ghosh, and today in this lecture we're going to talk about the chapter Last Lesson by Alfonso Donner for class 12 CBSE board examinations. So in this chapter we'll see what hmm, what made the author write the title Last Lesson. So let's start. So the last lesson is by the author Alphonse Daudet. Alphonse Daudet is the author of this lesson, the last lesson. In the last lesson summary, the author narrates events about the year 1870 when France was captured by Bismarck and by Bismarck-led Prussian forces. Furthermore, the Lorraine and Alsace districts were under Prussian rule. There was a discontinuation of teaching French in these two districts. So what happens in the last lesson? So what happens in the year like the author narrates in the year 1870 when France was captured by Bismarck-led Prussian forces. Furthermore, the Lorraine and Alsace the Lorraine and Alsace the districts और प्रूशियन के रूल में थे तो जो फ्रांस है फ्रांस की बात हो रही है ड्यूरिंग द ईयर 1870 सॉरी तो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट टीचिंग फ्रेंच तो क्या हुआ जहाँ मतलब वो फ्रेंच ऑब्वियसली फ्रांस में तो फ्रेंच सीखते थे तो वहाँ फ्रेंच मतलब वहाँ पढ़ाना ही बंद कर दिया फ्रेंच लैंग्वेज in these two districts, there was an order for the French teachers to leave. Consequently, Mayor M. Hamill was not able to stay in his old school. In spite of this, last lesson was from him was full of devotion and sincerity. One student of M. Hamill was afraid of him. There was an anticipation of punishment from the student when he came to school that day. However, he learned that this would be his last lesson. Soon he realized the importance of the subject. The story shows up how people feel when they don't learn the language. तो क्या हुआ एम हैमिल जो टीचर थे वहाँ के तो एम हैमिल जो टीचर थे was not able to stay in his old school. वो अपने पुराने स्कूल जहाँ वो फ्रेंच सीख पढ़ाते थे वो वहाँ नहीं रह पाए मतलब वहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब वहाँ के जो रूलर्स ने उन्होंने मना कर दिया फ्रेंच पढ़ाना. So what happens? In spite of this, the last sentence was full of devotion, full of मतलब सिंसियरिटी से एकदम पढ़ाया लास्ट लेसन को राइट. तो वन स्टूडेंट एक स्टूडेंट था जो एम हैमिल से बहुत ही डरते थे. देयर वाज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट. एंटिसिपेशन ऑफ punishment when he came to school that day. However, he learned that this was his last lesson. तो क्या हुआ जो एक स्टूडेंट था उसका नाम आपको लाइक आपके बुक में लिखा हुआ है तो उसका नाम है फ्रांस FRANZS राइट. तो फ्रांस जो था वो लेट हुआ था. लेट क्यों क्या क्योंकि उसको आज जो मतलब पार्टिसिपेंट्स का टेस्ट था उसी दिन जब पता चला कि लास्ट लेसन उसको मतलब लास्ट लेसन है तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे. तो उस दिन तो उससे पहले नहीं पता था तो वो लेट किया है ना. तो जब पहुंचा तो ऑब्वियसली सब वो देखा उसने अपने मतलब कि सब इतनी शांति लाइक संडे आफ्टरनून मतलब एक ऐसे दिया हुआ है ना आपके बुक में. तो वैसे ही मैंने मतलब ब्रिंगिंग समरी में पूरा नहीं लिखा होगा. Yes, I was just saying कि शुरू का पार्ट में. So there was an anticipation part मतलब उसको मतलब punishment मतलब from the student when he came to school that day. How he learned that उसको सब पता चल गया कि उसका फिर लास्ट लेसन है. So he realized that the importance of this. फिर जब उसको पता चला कि लास्ट लेसन है मतलब ये उसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे तो उसको रियलाइज हो गया द इम्पोर्टेंस कि इसकी भी मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है. The story shows how people feel when they don't learn their language. ये स्टोरी बताता है that how people will feel when they don't learn their language. अगर उसकी लैंग्वेज नहीं सीखनी अपनी मातृभाषा नहीं सीखनी मतलब मदर लैंग्वेज मदर टंग नहीं सीखेंगे सॉरी तो ऑफ कोर्स मतलब it will show the importance. The original story is by a French boy, Franz. Franz is a lazy boy. However, in spite of his laziness,
Franz likes to play and is of a sensitive nature. Furthermore, Franz hates his teacher, M. Hammond, in his school and has no interest in studying French. An order has come from Berlin after taking over districts of Alsace and Lorraine in France that the German language rather than the French should be taught in the schools there. Furthermore, it is the school French teacher M. Hammond's last day. ठीक है the narration of the story एक फ्रेंच बॉय मतलब जो फ्रेंच बॉय है उसका नाम है फ्रांस फ्रांस का he's a very lazy boy in spite of his he likes to play and is of sensitive nature अब laziness के मतलब अलावा he likes to play laziness है तब भी but he likes to play and is a sensitive man but the more Franz hates his teacher M. Havel in his school and has no interest in studying French ठीक है फ्रांस क्या है वो अपने टीचर को बड़ा नफरत करता है एम हैमिल जिनका नाम है तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सभी फ्रेंच An order has come from Berlin after taking over districts of Alsace and Lorraine in France. The German language rather than the French should be taught in the schools there. तो एक order आया बर्लिन से taking over districts of Alsace and Lorraine in France that German should be taught rather than French. ठीक है तो जर्मन पढ़ाएंगे rather than मतलब फ्रेंच के अलावा फ्रेंच से हम जर्मन की पढ़ाई करेंगे Furthermore, is the school teacher M. Hamill's last day. Obviously, अब अपने अगर ये ऑर्डर आए तो एम हैमिल जो टीचर मतलब फ्रेंच पढ़ाते थे उनका तो लास्ट डे है दिस टीचर हैज बीन वर्किंग फॉर देयर फॉर 40 years 40 years के लिए वो काम करते हैं वो टीचर हैज फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म he is also full of nostalgia and grief so obviously अगर उनको भी मतलब देश मतलब देश है ना एकदम से राइट ये वक्त हुआ क्योंकि लास्ट लेसन है और उनको भी छोड़ना पड़ रहा है ये कांट इट इज लास्ट डे सो ऑफ कोर्स उनको देशभक्त की कुछ मतलब फीलिंग्स जानी तो वो भी नॉस्टैल्जिया कि हाँ हमें तो पढ़ाता था ग्रीफ ऑफिस दुखी है जाना पड़ रहा है उनको He's teaching for 40 years. The village will also attend his last lesson so as to honor and respect him. The village is regretting and sad that they didn't learn their mother tongue in their childhood. विलेज में भी आए हुए थे उस क्लासरूम में एंड दे वर आल्सो रिग्रेटिंग कि हमने क्यों नहीं पढ़ाई की अपनी मदर टंग अपने बचपन में Franz receives a big show when he learns that this is his last lesson. He is shocked because he does not know French. Furthermore, on learning of the last lesson, a sudden interest arises in him for learning French. Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. तो फर्स्ट लास्ट डे के दिन वो क्या हुआ था उसमें झटका लगा उसमें झटका लगा क्योंकि लास्ट लेसन है ना सो क्या हुआ उसको टच आती ही नहीं है ऑफकोर्स उसको इतनी थोड़ा झटका लगा एक फिर क्या हुआ उस लास्ट लेसन के टाइम पे लर्न ही एक इंटरेस्ट जागा उसके अंदर एक इंटरेस्ट और उसने केयरफुली फ्रेंच पढ़ना शुरू किया जो एम हमें पढ़ा रहे थे ऑन द लास्ट डे Instantly he develops liking for teacher M. Hammond. His feelings of hatred for him suddenly came to an end. अब वो अपने suddenly मतलब M. Hammond जो है मतलब उसको अब हेट नहीं करते एम हैमिल को वो हेट नहीं करते फ्रांस अब he started liking for the teacher एम हैमिल वो मतलब अब पसंद करने लग जाते हैं एम हैमिल को मोर ओवर France develops respect for the hard work and sincerity for his teacher. अब एक मतलब रिस्पेक्ट मतलब देते हैं अपने टीचर एम हामिल को अपने उनके हार्ड वर्क के लिए उनकी सिंसियरिटी France is sad and ashamed for being unable to recite his lesson. वो भी शर्मिंदा है वो भी दुखी है for being unable to recite his lesson. Hamill explains that there all are at fault for lacking eagerness to learn. अब वो बोल रहे हैं अब हैमिल जो है टीचर है वो बोलते हैं कि वो उन सबकी गलती है वो उन सबकी गलती है और लैकिंग ईगरनेस इंटरेस्ट इच्छा नहीं है वो अपने लैंग्वेज पढ़ने अपना मदर टंग पढ़ने की Furthermore, he also includes himself as his fault. He blames himself for lack of sincerity in teaching them.
There's a reflection of his patriotism in his praise for the French language. He says that French language is the most logical and beautiful language in the world. वो बोलते हैं कि वो खुद अपने आप को ब्लेम करना नहीं चाहते बिकॉज फॉर द लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग एक सिंसियरिटी नहीं थी वो बोले ना कभी वाटर कर दो प्लांट्स को आपकी बुक में लिखा होगा राइट वैसे एक तो वो एंड वो ये भी बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मतलब लॉजिकल भी है एंड चल ब्यूटीफुल भी है इसी में हिम हैविंग गॉट एन इमोशनल ऑन दिस ओकेजन ऑब्वियसली दुखी हो गए इमोशनल हो गए वो व्हाई उनको छोड़ना पड़ रहा है ना इट्स हिज लास्ट डे फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड द लैंग्वेज फर्दर उसके बाद बोलते हैं कि जो क्लास को बोलने लगे कि अपने लैंग्वेज को बचाओ he said that being close to one language is a way to escape the is of slavery अपने लैंग्वेज को बचाओ he said that being close मतलब अपने लैंग्वेज से क्लोज रहोगे so you can escape the clutches of slavery मतलब एकदम से नौकर नहीं बनना पड़ेगा राइट this language will assist them in attending फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स मतलब अब तुम्हें नौकर नहीं बनने का जर्मन्स के लिए तुम्हें नौकर नहीं बनना पड़ेगा तो अपनी लैंग्वेज को बचाओ उसको पढ़ो याद करो तो वही बोल रहे हैं दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम मतलब फ्रीडम मिल जाएगा तुम्हें जर्मन से ये the people realize the significance of the mother tongue. Moreover, they feel the reason for the defeat is illiteracy. और तो डिफीट मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं पढ़ा उनकी भी इलिटरेसी उनको नहीं पता लैंग्वेज के बारे में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनकी वो इलिटरेसी consequence that it is impossible to remove one's language from a person. This is because it is something that is natural to a person. This means that no matter how hard the opposition may try, they will fail to remove one's language. तो बोल रहे हैं कि it is something that is natural to a person. मतलब एक लैंग्वेज को हटा नहीं सकते ना एक इंसान मतलब इंसान लोग से इट इज नेचुरल है नेचुरल टू पर्सन है ना अपना लैंग्वेज सीखना इट्स नेचुरल नो मैटर हाउ हार्ड द ऑपोजिशन में ट्राई नो इट इज दे विल फेल टू रिमूव वन फेल हो जाएंगे वो नहीं निकाल पाएंगे फ्रेंच नहीं निकाल पाएंगे this was all about the last lesson. So basically, the conclusion. The last lesson summary reflects on the importance of one's language for any race and why is it crucial to safeguard it. The conclusion भी यही बोल रहा है conclusion बोल रहा है कि importance दो अपनी language को importance दो value करो उस importance दो value करो for any race कोई भी race है respect of this race right and why is it crucial to safeguard crucial है ना crucial so you have to safeguard and give importance and give value to your own mother tongue right so thank you guys this was the full chapter for last lesson I hope you guys liked it please subscribe to my channel and please do comment if you want me to improve on it bye